Hello, everybody. Good afternoon, and a warm welcome to a special event that we are doing today to mark the International Youth Day. I am Ashish. I'm the founder and CEO of MASH Project Foundation. And this event we are doing in partnership with Daily Hunt and Save the Children. Today is a very special day, like I said, for all young people. It's a global celebration of being young, working with young, and truly realizing the potential of being youth to make this world a better place. And I think what could be a better day to have a conversation with some very inspiring young people who are doing their bits, who are working and inspiring many, many more young people to come forward and take a step towards making the world a better place. So I'm very, very thankful to our partners, Daily Hunt and Save the Children, who's helped us to do put this program together. And wishing you all a very, very happy International Youth Day as well. Thoda sa before we talk about, before I introduce my panelists, I'd like to talk a little bit about our partners. So Save the Children is a global organization, and in India, they've been working extensively in supporting and working for children's right and supporting young people to come and really empower them to become active campaigners, young campaigners. And they have range of programs like young campaigners is one of them, where both Kevin would be joining us as a panelist today, happen to be on their advisory panel. Then they have Project Generation Hope. Then they have initiative called Dream Accelerator, which really focuses on empowering young change makers to help and further improve their impact. So very inspiring work they're doing. So do check them out. And today's theme and the discussion is, what role can we play as young campaigners, as young change makers in shaping India's next 25 years? So as we are celebrating the 75 years of our independence, the Azadi Ka Amrit Mahotsav, it's a great reminder for us that how far we have come in the last 75 years. And also, it's a time for us to see where we will go forward in the next 25 years. So let's welcome our panelists and hear from their journeys, what work they've been doing with young people, and what are their ideas in shaping India's next 25 years. So I'd like to invite my panelists. Firstly, like to welcome Kevin Lee, who is the co-founder, editor-in-chief of Yuva. Yuva has been doing some very, very inspiring work with young people. Chances are very high that you would have come across their work or the kind of campaigns and the content Yuva has been doing. If you haven't, then definitely check out Yuva. They're doing some very, very impactful work. Kevin has been a journalist and a content creator for the last few years, and the both media digital space. And he has been breaking down complex issues and current affairs in a very, very simpler ways. And I truly really enjoys Kevin's contact. So thanks, sorry, Kevin's content. So thanks for joining us, Kevin, today. And Thanks for having me, Ashish. Thank you for all your kind words. Very, very excited to be here. awesome. Next we have Sarah, who is another young climate and a social justice activist, and she's from the state of UP, where she's been doing range of initiatives, including being the state coordinator for Fridays for Future, along with taking various initiatives, where she has been also the commander of an initiative called Bhumitra Initiative by Swapna Foundation, right? And led various climate change, sustainability related events, and engaged many government stakeholders, civil society organizations, and she very, very actively advocates for the rights on her digital media platforms as well. So great to have you, Sarah, and welcome to today's panel discussion. Thank you so much, Ashish. Thank you so much, and it's an honor for me to be here with Kevin and other panelists. And thank you for the warm welcome. Great. And next we have Kunal Das. Kunal is joining us all the way from Calcutta, right? And he has been associated with Save the Children as a child champion. और कुणाल काफ़ी क्लाइमेट इश्यूज पे पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे युवाओं के साथ काम कर रहे हैं. इन्होंने कई ऑफलाइन ऑनलाइन इनिशिएटिव्स के थ्रू अवेयरनेस पे काम किया है और साइड बाय साइड एडवोकेसी पे भी काम किया है.
So warm welcome to you, Kunal. Thanks for joining us. तो सर हेलो एवरीवन, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इस पैनल में पार्ट ले सकूं. थैंक यू एवरीवन. Great. So very excited. There are so many things to discuss with you. So I'll first start with each one of you. So to tell us a little bit about your work, I'm sure मतलब जितना मुझे मालूम है आप लोगों के बारे में वो बहुत थोड़ा सा ही पता है, but there is so much that each one of you do with young people for young people. तो थोड़ा ब्रीफ में हमें बताइए अपने काम के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, आप और बहुत इम्पोर्टेंट कि आप क्यों कर रहे हैं ये काम. Why are you doing what you're doing? What inspired you in person? I think that would be something as a great start to today's conversation. So Kevin, आपके साथ ही पहले शुरू करते हैं. Let's start from you first. Sure. Thanks, Ashish. Hi, Kunal. Hi, Sarah. Nice to be on this panel with you. My name is Kevin. Ashish has given me a very kind introduction. I work for an organization called Yuva. You can check us out at We Are Yuva on Instagram and any social media platforms. Our work is focused on engaging with young people and making important things interesting for young people. हमने जब युवा स्टार्ट किया था और अभी आई थिंक 4 साल हुए, हमने रियलाइज किया कि जो मीडिया में डिपिक्शन है युवाओं की इज वेरी वेरी डिफरेंट और वेरी वेरी लिमिटेड टू सर्टेन थिंग्स. 4 साल पहले when we used to see young people in movies and TV shows, it's either that they're having sex, they're doing drugs, they're partying, or they're college जा रहे हैं बस मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और very very one dimensional. And we knew that young people all over the country are so much more than that. And when Yuva started, the idea was to represent young people in a better way in all of the content that we put out. जब वो टाइम पे युवा हमने स्टार्ट किया था वो टाइम पे मेंटल हेल्थ पे ज्यादा चर्चा नहीं होता था. इट वाज नॉट द बिग बज़वर्ड दैट इट्स काइंड ऑफ बिकम टुडे. दैट वाज द पिलर ऑन व्हिच युवा वाज स्टार्टेड. बट टुडे वी टॉक इक्वली अबाउट gender, we talk about climate change, we talk about sexual health and education, basically anything that is important to young people. I think one step that we try to take हमारे काम में जो हम करते हैं is that our team itself is made of young people. The average age of people working at Yuva is about 23 to 24 years old. We have a lot of people from the queer community. We try to have people from different castes and religious communities to ensure a truly diverse team. And one of the big things that we did at Yuva early on, which has actually defined all of the stuff that we are continuing to do today, हमारा ऑफिस बॉम्बे में है, हमारे थोड़े लोग दिल्ली में भी बैठते हैं. एंड अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज, मीडिया कंपनीज सिट आउट ऑफ बॉम्बे एंड दिल्ली, एज यू नो. बट वी डिडंट वांट टू बी द पीपल जो मतलब बॉम्बे में बैठ के ऐसे बोल रहे हैं कि हम देश के युवाओं को समझते हैं पूरी तरीके से. So we actually went on a road show across about 35 to 40 cities, from Kashmir to Kanyakumari, literally, and from the northeast to Gujarat and Rajasthan. We went to about 70 to 80 colleges. हम around 8 से 10,000 युवाओं से मिले in person on these college campuses, and we just spoke to them and asked them to speak to us about issues that are important to them. And that's when we learned कि मतलब देश के युवाओं को अगर हम प्लेटफॉर्म दे सकते हैं अपनी आवाज रखने के लिए, then there's nothing like that. They will take care of the rest. All we have to do is enable and empower them to kind of talk about these things. And a lot of the work that we continue to do today is defined by the voice of young people. So that's what really inspires me to do this. I love interacting with young people. I really like talking to them to understand कि उनका विजन क्या है देश के लिए. Because I think that as older people sometimes, and I say older, I'm 29, and Ashish also knows this, we are young people, but in the rooms that we are often the oldest people in those rooms. But ऐसे थोड़ा cynicism हो गया है कि मतलब कुछ सच में बदलेगा या नहीं बदलेगा. But whenever I talk to young people, it just fills me with so much inspiration and confidence that this generation is really kind of going to go forward and change things. And that's why I do what I do, and that's why I'm so happy to be here. And again, thank you for having me. Thank you, Kevin. And I think very, very well put together that young people are very optimistic. They are, they see that vision, and which kind of inspires me also a lot to keep continuing working for the last so many years. And now you're saying we are on the much higher side of being youth, but again, when you work with young people, it kind of fills you with so much hope, which gives you so much confidence to keep continuing doing what you're doing. And I think Sarah, Kunal are both a great example of that. तो थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं. सारा, आप बताइए थोड़ा सा अपने काम के बारे में. What do you do? Okay.
Hi everyone again. एंड अभी जैसे कि अभी केविन सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, तो आई फील लाइक yes, we can surely bring a change if we have such younger people like you. Because to be honest, I am at this period or a stage in my life where I felt like I'll get or no one ever to support me or to bring me up. And when I started doing all these activism and to to work for climate change, to work for social activism, what actually happened, पहली बात तो लोग एक्टिविज्म को एक बहुत अलग तरीके से लेके चलते हैं कि बस इनका काम होता है बोलना. But somewhere me along with my team have been breaking the stereotypes of such kind of mentalities, that activists are not just for speaking or just to convey the thoughts. We are actually trying to walk the talk. And like when I started doing this at the age of 16, तो होता ये था कि most of the people I knew, my friends, my family, they actually said कि this is useless, this won't lead you to anywhere, you won't go anywhere with this thing. And it has been 4 years till now. Like I'm 20, just turned 20 this July, and I have about 800 people in UP who are actually working for the climate change and for the community service. And ये अपने आप नहीं हुआ. What I felt like कि जब when I was when I was studying in school, तो there were several teachers. I've always been a keen observer, and मैं देखती थी कि जिस तरह से like yes, I am from a good school, वहाँ पे sports को काफी promote करते थे, activities को promote करते थे, but there was nothing like कि आपको ये बताया जाए कि आप अब एक यूथ वाले पीरियड में आप एंटर कर रहे हो, एंड यू हैव टू डू दिस थिंग्स फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द सोसाइटी. एंड साइंस की टीचर आती थी, साइंस पढ़ा के चली जाती है, कॉमर्स की टीचर आती है, कॉमर्स पढ़ा के चली जाती है, बट कोई ये नहीं बताता है कि आपको एक्चुअली में नेशन के लिए करना क्या है. साइंस पढ़ के, सोशल साइंस पढ़ के, आई थिंक वी कैन डू एनीथिंग. वी आर ट्राइंग टू बी अ डॉक्टर, वी आर ट्राइंग टू बी एन इंजीनियर, वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज. बट वो एक जो मेंटालिटी बनी हुई है कि हम सिविल सर्विसेज करके ही नेशन को सर्व कर सकते हैं, ये चीज मुझे कभी अच्छी नहीं लगती थी. दैट डजंट मीन कि आई डू नॉट वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज. आई एम एक्चुअली इंक्लाइंड टू दिस थिंग, सिविल सर्विसेज. आई हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर नीट दिस ईयर, एंड मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आगे सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन करूँ. बट विद दैट उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में मैं क्या कर रही हूँ? व्हाई आर यूथ्स लाइक अस are wasting their time on scrolling social media? I like me along with so many people, I feel like जैसे मुझे उस टाइम पे फील होता होगा, अभी भी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है कि उनको कैसे हेल्प करनी है, लोगों को उनको कैसे इस चीज में कहते हैं ना कि कंट्रीब्यूट करना है. So that is why I have started working with so many initiatives and planning to circulate a lot of messages through different initiatives, but for the same cause, and that is for the welfare of the society, that is for the building of the nation, a better building of the nation, where I've been like it has been a month or two where I've started a foundation kind of a thing that, which is named as Pathshala. It's not like an organization, it's not like a movement. जैसे कि हम जिस स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लाइक वी आर 150 प्लस इन नंबर्स, एंड हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, अगर हम क्लाइमेट चेंज के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी सेगमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड पॉवर्टी, एनीथिंग इज देयर, तो हम अपने स्कूल्स को किसी तरीके से कन्विंस करके वहाँ पे अ सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना वर्कशॉप्स या फिर कुछ तरह के सेमिनार्स उन स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए. बिकॉज वी कैन नॉट चेंज आवर सिस्टम, वी कैन नॉट चेंज द एजुकेशन सिस्टम, वी कैन नॉट गो टू द प्रिंसिपल एंड से कि भाई आई वांट दैट बुक, आई वांट अ बुक which includes climate education, but we want some people, we want us कि हमें उस चीज के बारे में अवेयर किया जाए. एंड अगर हम इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं और हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें इन सारी, जस्ट लाइक I'm sitting here and I'm learning a lot from you and Kevin. I've been into conversation with Ashish, I think some way back in another session,
एंड वहां से अगर मैं चीजें सीख रही हूँ या मैं इस तरह के सेशन से कुछ सीख रही हूँ और मैं वो किसी को ले जाके कन्वे कर सकती हूँ, लोगों को अवेयर कर सकती हूँ, तो आई शुड डू इट. एंड पैरेलली we are trying to promote such activities like going to the slums and वहाँ की चीज़ों के बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करना. Basically, we are the privileged ones. We are sitting over here in luxury homes, luxury cars, traveling by luxury cars, and have a metal piece in our hands. We actually don't think that we should care about that, but that's the worst part of our mentality कि हम ये सोचते हैं कि हमारा जॉब नहीं है. तो I've been trying to make a one big team which is there for each and every city of UP, because अभी के लिए I have also been in a like school kind of environment, so I cannot travel to states and cities to cities. So what I've been trying to do is I have been trying to collect all these people, like-minded people in one state. एंड मतलब कहीं भी अगर हमें कोई इशू मिलता है, बी इट if suppose Ghaziabad, if suppose it's Agra, we have a proper team to look after those stuffs. We have a team जो अगर वहाँ पे कोई फॉरेस्ट कट डाउन हो रहा हो तो वो वहाँ पे इमीडिएटली एक्ट कर सके, या वहाँ पे कोई स्लम में किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो हम उसको प्रोवाइड करवा सके. Basically, we all are the youths, we all are studying in schools, and if I tell you that I have the youngest member in my team of 8-year-old. Wow. And what he does, he is like कि मुझे आप जो बताओगे I'll learn it and I'll try कि मैं उसको अपने स्कूल के अपने क्लास के बच्चों में बताऊंगा. एंड he's just in class 2nd. and that's the thing which motivated me कि यार मुझे ये चीज़ नहीं मिली है, बट हमारी जनरेशन को ये चीज़ नहीं, इससे छूटनी नहीं चाहिए ये चीज़. अगर हम ये काम कर सकते हैं, अगर हम लीडर्स बिल्ड, अगर हम खुद इस तरह से लीडर्स को बिल्ड करके उनको अवेयर कर सकते हैं तो वी शुड डू इट. सो एवरी नेम यू हैव मेंशन like Bhumitra and Fridays for Future and Litter Free and such organizations, I have been trying to aware more and more number of people, more and more number of students of school कि आप एक्ट करोगे, because there we are getting the roots of the youths. अगर हम वहीं से लोगों को मोल्ड करना शुरू कर दें तो अब जाके हमें इतना सोचना ही नहीं पड़े ना. एक वो कहते हैं ना रेग्रेट रहे कि यार नाउ आई एम लाइक मी बीइंग इन माय 20s, आई फील लाइक कि अगर मैंने ये 14-year-old से किया होता तो शायद मैं ये और ज्यादा चेंजेस ला सकती थी, बट अब वो रेग्रेट का फायदा नहीं है. तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू डू द सेम एंड आई थिंक वी शुड गो अहेड. Yes, I'm just saying आप अभी भी काफी young है, so it's always a starting point. It's like जब से 20 आया I have been feeling like no, like I'm older now. I think Kevin and I should leave the room. No, but very inspiring, Sara, the kind of work you have been doing, and so good to see that how you're not just limiting your work to yourself, but आप आगे leadership भी develop कर रही हैं, दूसरी cities में जा रही हैं, so that you can make the entire network of these young people together. So amazing work, big hats off. So अब कुणाल के पास चलते हैं, कैलकाटा से ही ज्वाइन. कुणाल, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अपने काम के बारे में, और किस तरीके से आप युवाओं के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं. हेलो एवरीवन, मैं कुणाल दास हूँ और मैं कलकत्ता में रहता हूँ और मैं सेव द चिल्ड्रन के साथ 2017 से काम कर रहा हूँ. तो मुझे याद है कि मैंने सेव द चिल्ड्रन कैसे ज्वाइन किया था. तो मैंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया, उसके बाद एक काफ़ी लंबा पीरियड का एक छुट्टी मिलता है हम लोगों को. तो उस वक्त सेव द चिल्ड्रन का काम हमारे एरिया में काफ़ी पीक पर था. तो पहले मैं वहाँ नहीं गया, मेरी मम्मी और मेरी दीदी गई वहाँ की मीटिंग में और उन्होंने कहा कि एक NGO है यहाँ पे काम कर रहा है कुछ दिनों से, तो आप भी जाओ, आपको अच्छा लगेगा. तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि सेव द चिल्ड्रन छोटे मोटे रिस्क नहीं, हमारे कम्युनिटी के सारे बड़े बड़े रिस्क के साथ काम कर रहा है कि उसे कैसे सॉल्व कर पाए. तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट चल रहा था डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट बोलकर. तो मैंने देखा कि हमारे स्लम में, मैं तो बचपन से स्लम में रहता हूँ और हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे स्लम्स है. तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिस्क है जिन्हें हम डेली लाइफ में निगलेक्ट कर देते हैं. जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि लोग यहाँ पे बिस्तर बेड के नीचे खाना बनाते हैं और ऊपर बच्चे सोए हुए हैं. तो कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे जो ओवन में गिर गए या फिर उनका बॉडी जल गया या फिर उन्हें बहुत नुकसान पड़ा. फिर ड्रेन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है तो यहाँ पे ड्रेन भर जाता है, ड्रेन का सारा गंदा पानी घर के अंदर घुस जाता है.
तो ये सब इश्यूज हम बचपन से रह रहे थे, बट हमने कभी सोचा नहीं। बट सिविल चिल्ड्रन आया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये सब पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी साल मुझे याद है कि सिविल चिल्ड्रन ने ये क्लाइमेट चेंज कैंपेन शुरू किया था, जिसके तहत हम लोगों ने वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया। तब मैं एज अ चाइल्ड चैम्पियन सिविल चिल्ड्रन के साथ काम करता था। अब मैं एक यूथ एडवोकेट हूँ। तो मेरे लिए एक जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी मुझे सीखने को मिला, और जो भी मैंने सीखा वो मैंने अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को सिखाया। तो इस तरीके से मैं आज कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं बच्चों को और हमारे बड़े लोगों को ये बताऊँ कि क्लाइमेट चेंज रियल है। साथ ही साथ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे पहले, जब तक उन्हें बताया नहीं गया। तो ये जो प्रोसेस था हमारे लिए कि पहले उन लोगों को बताना, फिर इसके ऊपर काम करना, तो ये काफ़ी एडवेंचरस था। ये पूरा एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं थे इसके बारे में। लोग पानी के बारे में बात करते हैं, गार्बेज के बारे में बात करते हैं, बट ये टॉपिक उनके लिए बहुत नया था। तो उन्हें ये समझाना कि ये क्या होता है, किस लिए होता है, वो बहुत मुश्किल था हमारे लिए। बट हाँ, मैं अब ये कह सकता हूँ कि हमारे एरिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं खुद से एज एन इंडिविजुअल कि इस चीज़ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, या फिर अपने फैमिली के साथ। तो ऐसा हमारे एरिया पे अभी चल रहा है। और रिस्क को लेकर मैं यही कहूँगा कि हमारे आसपास काफ़ी रिस्क है अभी भी, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। बट अगर हम साथ मिलकर ना आए तो ये रिस्क सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और सिविल चिल्ड्रन के ज़रिए मैंने बहुत मीटिंग में गया जहाँ पे मुझे अपनी आवाज़ रखने का मौका मिला कि नहीं, अगर मैं स्लम में रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आवाज़ उठा नहीं सकता हूँ या अपनी आवाज़ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में रह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि हमारे लिए ये डील करना कितना मुश्किल है, और हम ही बोल पाएंगे कि इस चीज़ को डील करने के लिए हमें क्या क्या हेल्प की ज़रूरत है, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के साथ हम आज हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे आशा है कि हम ऐसे ही काम करते रहेंगे फ्यूचर में। थैंक यू कुणाल, आपने अपना जो भी कार्य शेयर किया हमारे साथ, मतलब काफ़ी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग है। और भी जैसे हम लोग और डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे तो और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका कार्य और युवाओं को भी प्रेरित करता है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस ईयर्स थीम। सो यूनाइटेड नेशन का हर साल एक थीम रहता है यूथ डे पे। तो इस साल का थीम इज अबाउट इंटरजेनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो किस तरीके से हम लोग अलग अलग एजेस, एज अ यंग पर्सन, we can work across different age groups and really closely work together to see the impact that we want to create, right? तो थोड़ा सा मुझे चाहूंगा कि आप लोग इस थीम के बारे में क्या सोचते हैं, और आपका जो अपना काम है इस कार्य के थ्रू अलग अलग जनरेशन्स को किस तरीके से आप जोड़ रहे हैं। हाउ आर यू कनेक्टिंग डिफरेंट जनरेशन्स थ्रू योर वर्क, इवन इफ यू आर नॉट, what do you envision, what do you see going forward that as young people we can do? So I'll start with you, Kevin, first. Let's पहले केविन के साथ शुरू करते हैं. Sure. Thanks. I want to say also very inspiring to hear Kunal, आपकी कहानी, Sara, your story as well, and the journey that you've been following. I think Ashish and I get to learn a lot from young people as you as well. It's not a one-way thing, and that perhaps is a good place to start by talking about intergenerational equity. We are millennials right now. People who are older than 25 are now in positions of power where हम अपने social enterprises चला रहे हैं, और we are trying to do work for young people. Our government's average age, or the people in our government, is obviously substantially higher than that. There are also lots of people within NGOs, CSOs, development sector, funder ecosystem who are quite old. So I'm privileged enough to, I've worked with people across generations. There are people I've worked with who are 65, 70 and still working, still very, very passionate about changing the world. Obviously interact a lot with people between the ages of 26 and 40. Very fortunate, like I said, a lot of my team is under the age of 25. Keep meeting young change champions like Sara and Kunal who are under this age as well. I think एक चीज जो है that we should kind of keep in mind, and because it's Youth Day, I will take the side of younger people here. A lot of times I think sometimes we from older generations, हमें empower करना है younger लोगों को for sure, but sometimes we are also selfish about giving up our platform for younger people. हमें कभी-कभी लगता है कि because of our experience, because of whatever we've been through, we might know better, or we might have an edge.
which is all, and it's not a bad thing intentionally. मतलब सबके intentions I think बहुत बहुत अच्छे हैं. But on some level, I think this needs to sink into our deeper consciousness ki, with things specifically like climate, with the planet, with the state that it's in now, with some of the problems that are getting worse, right, in terms of population density or overcrowding or access to resources, natural resources, that kind of stuff. We have to take accountability that our generations are perhaps more responsible for this problem, whereas younger generations are actually the ones that have to live with the problem in the future. So I think in some cases, I think older generations, what their role really is to empower younger generations as soon as possible, but also know when to get out of the way. You know, after giving your guidance, after giving your expertise, after all of that, letting young people really lead these programs, because there is no other way to do it. I think ये जो हम ये model बहुत चीज के लिए use करते हैं कि older people will start a project, run a project, and then hand it over. That sometimes has a few flaws कि those projects are still designed by older people, thinking about younger people, rather than by younger people think, क्योंकि the lived experience of being a young person is going to be very, very different. And I think this is something जो मतलब मैंने बार बार देखा है कि when I am giving a younger person advice, right, or when I am receiving advice from an older person, obviously age का हम respect करते हैं, which we should do, right? We respect people for their experience. There is no substitute for experience. Very often we find ourselves saying, when I was your age, this happened to me, और मैंने ऐसे सीखा है, और मैंने ये knowledge प्राप्त की है, मैंने ऐसे सीखा है. But it is not as common for a young person to say, but you are not my age now, और मुझे जो पता है about being a young person, about my community, about how to communicate with young people, वो शायद आपको पता नहीं है, because I think like ये जो assumption है कि younger people always have to try and understand कि older people are coming from a place of experience or good intent, that should go both ways. Older people also, I think, should understand that younger people have their fresh perspective, they have their own problems, they have their own insights, which are as important for us to learn. Till 6-7 years ago, or even when Yuva was started till 4 years ago, हम जब communicate करते थे social issues के बारे में, we used to do it in a language which was very kind of millennial in that sense, कि थोड़ा like the language used to be a little bit older. Whereas now a lot of our communication is done through memes, a lot of our communication is done through reels, because we understand that that is the language that young people use, right? Even Ashish, for example, all of the work that we are doing on Josh with Daily Hunt, young people want to consume content in less than 90 seconds. So I think each generation has a role to play. Each generation has its own advantages to kind of bring to the table. I think what is truly needed for intergenerational equity is all of us give each other the same respect. It should not just be that younger people are giving older people the respect and saying, you have the expertise and teach us. It also has to start from older generations giving younger generations respect and saying, we might not understand everything that you are doing, but you have our support and you have our empowerment. So that is my limited perspective as being, again, a slightly older person in this rung, that I think young people really know what they are doing. So sometimes we need to empower them and then maybe step out of the way and learn to communicate with them in their language. I think those are the 2 points that I would like to add. I think very, very valid points Kevin put here, that how can people who are actually, on the other side, like especially policymakers, right? So many of them are making policies for young people, but how often do they really hear their perspective and their thought process? And I think that kind of gives them very limited worldview of what they're doing, right? But again, so many initiatives like what UY is doing, what Save the Children is doing, what we do at MASH, it's kind of like really getting the voices of young people, and then that could be put across different generations, different stakeholders, right? So we will come back on how can we build bigger movement engaging some of these stakeholders. But thanks again, Kevin, for making some very, very useful points there. I'll now go to Sarah and quickly understand both from Sarah and Kunal, given you are still very young, like that perspective, how do you see, what are the challenges that you've kind of experienced when you talk to people across generation? This could include your teachers, this could include your parents, your family, relatives, and of course then there are multiple other stakeholders that are involved
of our social fabric. So Sarah, what do you have to say on this? Yeah. So yes, this intergenerational solidarity. If we talk about this, if we talk about equity, मैं आपको बताऊं तो it's like we as the youths are some sort of a connecting bridge to the younger generation, to my even my younger generation, to the older generation. What I feel like हम वो बीच वाले रास्ते में हैं, एंड अगर हम चाहें तो हम इन दोनों लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ में थ्रू दिस ब्रिज. And trust me, I am feeling so blessed that we have such cool younger generational people like you, Ashish and Kevin, कि हमारे पास ऐसी गाइडेंस है. बट सबके यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है. ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? The same thing that Kevin said, that we actually think that कि उनको ज्यादा नॉलेज है, उनके ऊपर छोड़ देते हैं, and they are busy in their lives, they are busy in their things. And to I think it's a mean answer, but yes, people in UP actually says that UP cannot be fixed, and they say कि after 25 or you can say 30, they be mean and they do not act selflessly at all. उनको अपनी फैमिली को फीड करना होता है, उनके लिए एक अलग प्रायोरिटीज हो जाती हैं लाइफ में. उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन उनके शहर में भूखा सो रहा है. they really don't care. They are studying hard. Even of people of my generations have put up their thoughts कि भाई I am studying hard because I have to feed myself and I have to get a luxury life and I have nothing to do else in my life. Just let it be. Whatever is happening, you are doing it now. You can do it all alone. Just go ahead. ऐसे answers मिलते हैं. But yes, working in such a group where we tend to go on ground, where we speak to the people. हम लोग उस जनरेशन को भी पकड़ते हैं जो वो 30-35 वाली होती है, जो एक कहना था एक कभी हम पार्क में जाते हैं, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में फटाफट शेयर करूंगी, उससे आप कनेक्ट कर लेना इस चीज को. हम एक पार्क में जाते हैं, देयर इज अ कपल ऑफ आई थिंक मिडिल एज कपल 30 to 35 and they have came here to spend a time in a park. एंड हम उनको जाके पोक करते हैं कि आपको पता है ये हो रहा है, आपको पता है ये हो रहा है, एंड एक्चुअली दे डू नॉट नो. ठीक है, फिर उनको समझ कैसे आता है जब हम उनको एक एग्जाम्पल रखते हैं कि बताइए अभी ऐसा है, फिर हम तो इतने बड़े हो गए, अब आपके बच्चे होंगे तो कैसे होगा, अभी तो इतनी गर्मी है, फिर आप कैसे करोगे, फिर आप पार्क में नहीं आ पाओगे. तो जब हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय दो स्वीट sugar coated words, as well as my younger generation, if I say that 8-year-old boy, उसको मैंने कैसे समझाई ये चीज कि भाई climate change is happening. I said to him कि okay, like his name is Arhan. Arhan, you know कितना गर्मी हो गया है इस टाइम पे, and you are blessed that you have the AC, and चलो एक दिन मेरे साथ तुम स्लम चलो. and मैं उसको लेके गई. ट्रस्ट मी, उससे 5 मिनट वहां पे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो गर्मी. तो उसके लिए कि रियल लाइफ एग्जाम्पल सेट हुआ कि भाई हाँ, मतलब सच में लोग सफर कर रहे हैं, उसको नहीं पता है बिकॉज ही इज सिटिंग इन द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हमें कैसे कनेक्ट करना. इनफैक्ट इवन द स्कूल चिल्ड्रन हैज टू बी उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान्ड अप होनी चाहिए कि उनको पता चले कि उनके स्कूल के बाहर का जो एटमोसफियर है वो कैसा है. हम तो बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. एज वेल एज फॉर द ओल्डर जनरेशन, उनको पता है कि उनसे गलती हो गई है. मतलब आप लोग तो फिर भी आई थिंक यू आर द बेटर वन. आपसे ऊपर के जो थे वो लोग झोले यूज करते थे एंड वो इतनी जल्दी आ गए प्लास्टिक के ऊपर कि उनको पता ही नहीं चला. सो बेसिकली उनसे कनेक्ट करने के लिए हमें ये बोलना पड़ता है कि ओके नानी, आपके पास तो वो झोले थे, वो ज्यादा अच्छे होते थे, क्योंकि देखिए वो तो अभी तक चल रहे हैं. प्लास्टिक तो देखिए ऐसे ऐसे हो गया एंड ये सारी चीजें हो गई. तो बेसिकली वी एज द यूथ्स कैन कनेक्ट all of these people together अगर हम उस चीज को वाइजली, जैसे कहते हैं ना, स्मार्ट वर्क करें. पहले के लोग स्मार्ट वर्क कम करते थे और हार्ड वर्क ज्यादा करते थे. ठीक है, तो उन्होंने झोले से लिए, सब कुछ कर लिया, उन्होंने प्रॉपर एक बना के रखा था. बट समवेयर क्या कुछ चीजें आई एंड दे इट्स लाइक ऑल अबाउट कोरोना वायरस, इट केम इनटू अस एंड वो सब चीजें डिस्ट्रॉय करने लगा धीरे धीरे. सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू इंश्योर दैट वी एक्ट एज अ ब्रिज for the younger generation and for the older generation to understand the things which are going on. Because जो एक older generation है, they have their priorities, they do not care about such things. जो हमसे छोटे generation है उनको ये बताया नहीं जा रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं. So basically हम as the youths
एज द प्रेजेंट जनरेशन विच इज सफरिंग एंड जिसको और भी आगे सफर करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि आने वाली जनरेशन को भी खतरा है, हमारी ओल्डर जनरेशन भी इसे सफर करेगी. सो वी हैव टू एक्ट लाइक अ ब्रिज in between them, and we have to connect them all together in whatsoever kind of work we are doing through different organizations. And I think yes, हम इतने भी लोग यहाँ पे हैं Save the Children India से, MASH से, and युवा से, हम लोग भी इतनी सारी छोटी छोटी चीजें रन कर रहे हैं. बट आई फील लाइक कि हमारे यहाँ कोई एज बॉर्डर्स नहीं है. इवन अ पर्सन ऑफ 35-year-old can come onto the drives, he can do a cleanup, he can come and aware the people. And I think that's the thing we can do to build connection in between all the generations. And अगर इसी पेस से हम इसी तरह से एक ब्रिज का काम करते रहे कनेक्ट करने में लोगों को, I think no bigger problem can arise in between us. And ठीक है, I won't claim as a like media reporter कि 2030 में दुनिया खत्म हो जानी है, but नहीं, ठीक है, we can save it if we are together, if we can connect all these things together in a very peaceful manner, either than losing respect. अगर हम किसी को, जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारी जनरेशन बहुत रिबेलियस होती है, हम लोगों से बहस करने लग जाते हैं, वही नहीं करना है हमें ट्रिगर नहीं करना है, हमें स्वीटली उस चीज को कनेक्शन करना है. सर आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि हमें किस तरीके से सबको साथ लेके करना है, हमें किस तरीके से एक ब्रिज बनना है. एंड टू ब्रिंग चेंज यू कांट ऑलवेज बी रिबेलियस, यू नो, लाइक ऑफ कोर्स सम places that's what we need, but being empathetic. जब आपने बोला ना कि आप अपने आप को दूसरे के शूज में रख के देखें, उनके नजरिए से देखें, जब आपने वो एग्जांपल दिया about that couple in the park and give you an analogy example, I think very very wise things that you have said in a very short span of time, that how we need to really, you know, as a young person, we are at a very beautiful and a great times of our lives where we can really bridge that gap with a much younger generation, at the same time much older generation. And I think that's why this whole idea and the theme has also been talked about, that intergenerational solidarity, एकजुटता कैसे build कर सकते हैं across ages, across different generations. So thanks a lot, very interesting to hear you. Now I'll go to Kunal. आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं एकजुटता, solidarity किस तरीके से अक्रॉस अलग अलग ग्रुप्स के साथ जिन्होंने आपने काम किया, किस टाइप के चैलेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं, एंड अपना रोल एक युवा की तरह, एक एज अ यंग पर्सन की तरह आप किस तरीके से देखते हैं इसको? तो इस टॉपिक से मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है कि जब मैंने काम करना शुरू किया था ना, तो हमारे मीटिंग्स में, हमारे एक्टिविटीज़ में सिर्फ बच्चे और महिलाएं आती थी. तो घर के जो मेल मेंबर, कुणाल आप शायद मुझे सुन पा रहे हैं, शायद आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, बीच में स्टक हो गया. Let's just wait, I think, for a few seconds till the time we get back, Kunal. I hope it's not my connection. केविन आप सुन सब पा रहे हैं ना मुझे? चलिए कुणाल का वेट करते हैं जब तक वो वापस आ पाए. कुणाल आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सॉरी, बीच में कनेक्शन लूज हो गया था. आप बताइए, शुरू से बताइए प्लीज. हाँ, तो मैं इस टॉपिक से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने सेव द चिल्ड्रन के साथ काम करनी शुरू की, तो बस बच्चे और महिलाएं काम करती थी, और जो घर के मेल मेंबर्स है, एजेड मेंबर्स है, वो काम नहीं करते थे. तो हम उन्हें बुलाते कि आप भी आइए, हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे साथ काम कीजिए, ये हमारे समाज के भलाई के लिए है, हमारी सोसाइटी के भलाई के लिए हो रहा है. तो वो हमें इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कि ये सब टाइम वेस्ट है, हमें ये सब लेना नहीं है. तो हम लोग ने उन्हें कहा कि आप कब आइएगा हमारे पास. तो उन्होंने कहा कि जब हम कुछ रिजल्ट देखेंगे तब हम इस चीज़ पर आपके साथ काम करेंगे. तो हमने उन्हें कहा कि ठीक है, आज से 3 महीने बाद या आज से 4 महीने बाद हमारे एरिया में कोई डस्टबिन नहीं था, लोग ऐसे ही रोड पे कचरा फेंकते थे और केएमसी की गाड़ी आती उसे उठा के लेके जाते, इससे बहुत गंदगी फैलती थी. तो हमने उन्हें कहा कि हम काउंसलर को बोलकर हमारे एरिया में डस्टबिन लेकर आएंगे. तो जब डस्टबिन लेकर आ जाएंगे तब हमें आप लोगों को हमारे मीटिंग्स में, हमारे कामों में हिस्सा लेना पड़ेगा. तो फिर 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा, और हमने अपने एरिया में 3-4 डस्टबिन काउंसलर को बोल के मंगवाए, सब बच्चे और महिलाएं मिलके. उसके बाद वो हमारे साथ आने लगे. तो मैंने ये चीज़ देखा है कि स्लम्स में देखा गया कि बड़े लोग हमारे साथ ऐसे नहीं जुड़े. उन्होंने पहले हमारी काबिलियत को पहचाना, हमारी काबिलियत को देखा, तब वो हमारे साथ आए. तो इस तरीके से हम लोगों ने एक ब्रिज इस्टेब्लिश किया कि नहीं,
बच्चे और बड़े कैसे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जब भी हम अपने एरिया से बाहर गए तब भी हमने ये देखा कि बड़े लोग खुद से नहीं आए, उन्हें कुछ पहले दिखाया गया कि नहीं, हम बच्चे या हम महिलाएं ऐसा कर सकते हैं, तभी आप लोग आएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये एक्सपीरियंस देखा कि ये गैप कैसे फुलफिल हुआ, ये ब्रिज कैसे इस्टेब्लिश हुआ। तो मेरा नज़रिया इस टॉपिक पर ये है कि अगर बड़े लोगों को ये दिखाया जाए कि हम कुछ कर सकते हैं या फिर हमें वो पोटेंशियल है करने का, तब वो हमारे साथ हमें फुल्ली सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत शानदार। आई थिंक आपने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से आपने एंगेज किया दूसरे एज के ग्रुप्स को, और जो यूजुअली एक तरीके से एक एक पर्सपेक्टिव मिस हो जाता है जब आप अपना भी प्रोग्राम करते होंगे, तो उसके अंदर एक मेल पर्सपेक्टिव ऑफ हैविंग अ सीनियर ओल्ड मेल मेंबर वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्सपेक्टिव को अपने प्रोग्राम में डालना और प्रोग्राम को डिजाइन करना, राइट? So again, thanks to all of you. I think I could take so much insight, so much of um, very interesting takes on different aspects of intergeneration, how to build intergenerational solidarity. अब थोड़ा सा एक ज़्यादा समय रह नहीं गया है और 10-15 मिनट ही है हमारे पास बचे। तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप काम कर रहे हैं और युवाओं तक कैसे ले जा सकते हैं और युवाओं को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी बिल्ड bigger movements to build more young campaigners, more active citizens? So what would be like, all of you I know are doing some work, but then people who are listening today, वो कैसे जुड़ सकते हैं इन अभियान से, या जिस भी जगह हैं, where can they find such opportunities also to become a part of the change process, right? So how do we get started? How do we build bigger movements, right? So I'll come back again to Kevin. Kevin, let's start from you first. It's a tough question to answer, and I think one example again that we have with Sarah and Kunal is here are young people who are not waiting for somebody to come to them before making change. That process will always take time. There are organizations, दो level है, right? Organizations है, you have MASH, you have Yuva, you have Save the Children. We will always be limited by the amount of resources that we have. अगर हमें as Yuva, now we have a team in Bombay and Delhi. We have about 200 youth champions across different colleges in about I think 50 cities across India. लेकिन अगर हमें suddenly for example North East पे focus करना हो या एक state पे focus करना हो, for us to build those capacities internally will take a lot of time. हमें शायद partner ढूंढना पड़ेगा, we will have to take a call कि हम लोग कितना money spend कर सकते हैं, कितना time spend कर सकते हैं, and those resources for us are always going to be limited. One part of it is being proactive. If you're a young person, आपको ऐसे change affect करना है, you can do it by talking about things on your Instagram, on your Takatak, on your Josh, on your social media, right? That is one thing that you should not wait. There are many ways to affect change. It can be as simple जैसे कुणाल ने बात की, एक specific locality में अपने काउंसलर से बात करके कचरे के डब्बे लाना, which is a very big deal, क्योंकि वो कचरे के डब्बे अगर होंगे नहीं, then everybody is just going to dump trash on the roads. That is also change. Not everybody has to be Greta Thunberg की मतलब United Nations के सामने जाके she's talking about things, right? Those people are the inspiration, but that change can start from anyone. So on a young person level, I think number one, I don't think that you should wait for opportunities. But number two, and this is a slightly important thing for organizations like ours, काफी सारा repetition होता है. Like ऐसे हमें भी पता है कि social sector में there are certain topics, certain things that people that are more fashionable, for lack of a better word. जैसे अभी Youth Day has become a day where a lot of us will do things about this. Pride Month, for example, has become a month where a lot of people will talk about gender and sexuality. तो 4-5 साल पहले नहीं होता था इंडिया में, लेकिन आजकल बहुत होता है. The amount of people who want to get involved in these kind of campaigns very high. Earth Hour जैसे हमने देखा है, still fashionable, but there are when we as organizations are planning our engagement, are planning our projects, we should not only go for things which are seen as fashionable. जब युवा ने when युवा was started 4 साल पहले, like I said, mental health पे ज्यादा लोग चर्चा नहीं कर रहे थे. अभी it's become kind of a developed thing, and we don't want to, as a company, it's important for us कि we want to be in that conversation कि mental health की बात हो रही, we want to be in that conversation. But in those conversations, we also have a role to play to bring as many people into that conversation as possible. One.
बट सेकेंडली नाउ व्हेन वी आर प्लानिंग समथिंग, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे प्लान करते हैं कि हमारा नेक्स्ट कैंपेन किस चीज पे होना चाहिए या नेक्स्ट फोकस किस पे होना चाहिए, we should try to see places which are not already full. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम कैंपेन का सोचते हैं, वी वांट दैट कैंपेन टू बी सक्सेसफुल वेरी नेचुरली, सो वी ट्राई टू स्टिक टू द सेम पाथ. कि अगर हम फॉर एग्जांपल सेक्सुअल एजुकेशन पे कुछ कर रहे हैं तो हम झारखंड में कर लेते हैं बिकॉज दैट इज द इकोसिस्टम वेयर अ लॉट ऑफ दिस स्टफ ऑलरेडी हैपेंस, बट मे बी इट्स मोर needed in a different state, maybe it's needed more in Rajasthan, maybe it's needed more in Assam, maybe it's needed more in those states. I think Sara made a very, very good point, and I genuinely, this has kind of become my universe theory now. Key to affect change, number one, you have to be a little bit selfless. You can't always think ki what is the sure shot way where I will succeed and I will be seen making a change or my organization will be successful. There has to be an element of seva. And I'll say this is from one of my inspirations, Hartirath Singh, who's part of the Hemkund Foundation, and during the second wave of COVID, a lot of the oxygen that was provided in North India was provided by that foundation. And he talks about this all the time, ki the intention has to start from main kya seva karke, how can I help people, right? And then plan it rather than success. So those two things. For individuals who want to be part of the change making process, don't wait for somebody to come to you. Be proactive. People will discover you. People will amplify you. Yuva pe bhi hum story dal ke we will get you social media startup, but take the first step. Don't wait for organizations to come to you. And for organizations, be a little bit more selfless. Don't just stick to the safe paths. Find things that nobody else is talking about and find a way to kind of do it there. And obviously, most importantly, we cannot do this alone. So collaborate as much as possible within each other. I would say those are my broad points. Great. I think, Kevin, you touched upon again some very, very useful points in terms of how collaboration is really key, being selfless and not just looking at some, like more the kind of path which is well walked, but then the idea is to like take this to more people, right? But I want to come back to one more question before I go to Sara and Kunal with this question. So I see that Yuva does a lot of digital, like it's using a lot of digital as a tool to reach out to young people, right? So, and I think, of course, after pandemic, there has been also an upsurge in terms of data consumption, digital media consumption, and all of that. So please throw some lights. What kind of insights that you have been experiencing? How young people are interacting with content, and how you see the role of such kind of platforms going forward in creating more youth-led change, more communities which are very, very youth focused when we talk about building movements. Yeah. We try to kind of have a pyramid view of this, and I think that will help all of us understand. ठीक है कि if there's a pyramid and at the top of the pyramid is change, and say it's a simple thing, say it's about, let's take Kunal ka example, right? About cleaning and keeping your surroundings clean. The top of the pyramid is people like Kunal and people who worked in that thing, जो actually जाके अपने counselor के साथ with government intervention or with municipal body intervention made that change. That is really, really important. That is the top of the pyramid. Everything below that, and within that comes workshops and modules, within that comes social media, digital engagement. Everything within that is more geared towards, अगर हम awareness spread करेंगे, that gives more people the opportunity to come to the top of the pyramid. So अगर मैं campaign करता हूँ on any social media platform about the importance of cleanliness, and I break it down in a way that young people really, really understand कि वो ऐसे inspire हो जाते हैं कि मुझे भी कुछ करना है ये field में. That is the role that Yuva primarily plays, right? Creating that education, creating that engagement. What we have to keep in mind very realistically, and this is something that I tell our partners all the time, and it's actually bad for business, but I tell them very, very realistically anyway. कि सोशल मीडिया पे तुम्हें नंबर्स मिल सकते हैं, तुम्हें स्केल मिल सकता है, तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट इज ग्रेट, but you have to keep in mind that the percentage of people who will see a social media post and then take action based on it, that percentage is still going to be low. Abhi a numbers game hai, the more people you reach, the more chances that somebody takes action. That is the vision I think, Ashish, like you would have with your partnerships on social media. We also have that vision, but we know young people enough to know ki one thing is being inspired, one thing is consuming content,
making movement, making change is always going to be another thing. Right. The trick and the solution, the way that I see it, is that in all of our engagements, we try to attack it at multiple levels of that pyramid. कि हम social media करते हैं, that's a very big important. There is no other way to reach people today, right? In this world which is online, after the data boom, after the fact that so many people are consuming so much content online, for you to not have social media presence is criminal. Social media presence zaruri hai. You needed to reach all of those people, but by itself it is not enough. You need to have workshops, you need to, and social media pay, again, like I'm saying, we have 300,000 followers now on Instagram, we have over 150,000 followers on Josh. We can reach millions of people every week through the content that we put out. लेकिन आप एक वर्कशॉप कर लो with just about 40 to 50 people. आप एक टाउन हॉल करो where 4 of us are talking and maybe there are 40, 50, 100 people listening. The impact of those is much higher. So combine that into your efforts. Don't just keep it about social media. At the end of the pyramid, if one person like Kunal wakes up and says कि नहीं आज मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने काउंसलर को कन्विंस करके इधर 4 कचरे के डब्बे लगवा रहा हूँ, then all of the efforts below that have been worth it. But yeah, I would say that social media are extremely important, but not enough on its own. And that is something that we have really imbibed. हमें भी लगा था pandemic के time पे everything is shifting online. We'll kind of go online and there is no need for us to go offline. We have been proven very, very wrong. I think whenever we meet offline, the kind of impact that is there offline is unmatchable. So we recognize online, and I will always be an advocate for how important social media and digital engagement is for stuff. But just to point, obviously it can't be only that, and that has to go hand in hand with other things. Absolutely. No, I agree with you. This is something, Kevin, we have also experienced, that social media can be an enabler. It can be a tool, but it can't be the, end for all the solutions, right? But it can definitely be a major enabler. So yes, थोड़ा टाइम कम रह गया है, तो सारा और कुणाल थोड़ा आपसे इस टॉपिक के बारे में फटाफट सुनते हैं, and then we should start wrapping up quickly. I also see a lot of people are commenting and emojis. If there is any questions to our audience you want to ask, so we have some time for Kunal, Kevin, and Sarah. So feel free to put your question in the comment section. So Sarah, what do you, what has been your experience in terms of building movements? You worked with people across cities in UP as well, right? So how do you think this can be scaled up, right? And share something from your experience, please. Okay. So scaling up the movements and the works we do requires a lot of efforts, first of all. And of course, the platforms. We as the youths somewhere are diverted somewhere. जैसे भैया ने बताया अभी क्या कि सोशल मीडिया आ जाता है बीच में, ठीक है. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हो. बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं पर उनके पास इतनी सोशल मीडिया स्किल्स ही नहीं है, ठीक है. एंड देयर कम्स अ पर्सन जो कि जेन्युइनली काम कर रहा होगा, कम पोस्टिंग कर रहा होगा, काम भी कर रहा होगा, बट स्टिल ही और शी इज गेटिंग ब्लेम्ड कि भाई इसने फोटो की चाहिए, ये फोटो के लिए काम कर रहा है. तो फॉर ऑल दोस थिंग्स आई थिंक वी जैसे मैंने कहा ना, एज द यूथ हमारे पास एक नेचर आ गया है रिबेलियस होने का, क्योंकि ये हमारा एक एटीट्यूड बनता जा रहा है. लोग जब ये कहते हैं कि नेटफ्लिक्स एंड चिल, मुझे बहुत चिढ़ होती है इस वर्ड से, नेटफ्लिक्स एंड चिल. व्हाई टू चिल? योर प्लैनेट इज बर्निंग. आपका पूरा खत्म हो रहा है सब कुछ और आप नेटफ्लिक्स से चिल ही कर रहे हो अभी. तो बेसिकली वी as the youth we have those things, like this is the period ना जब हम learn कर सकते हैं, adopt कर सकते हैं changes, जब हम सीख सकते हैं चीज़ें. अभी ये तो नहीं कहा गया कि आप बस आपने जो सीख लिया, आपने adolescence तक जो आपने 6-7 तक सीख लिया, अब आपको नहीं सीखना है. No, this is the time where we can learn more things, and scaling up these moments requires a platform, of course, and that is why like we have been trying to create leaders of their own city. Why there is only one leader from the whole city? मतलब लोग ग्रेटा से इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे हैं वो जाके प्ले कार्ड लेके खड़ी है तो सब प्ले कार्ड लेके खड़े हो जा रहे हो. कोई समझ ही नहीं रहा कि उसको क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए. आपके खुद के घर के बाहर इतनी गंदगी है और आप जा रहे हो एकदम पॉश एरिया में प्ले कार्ड लेके. क्यों? Because you are getting inspired by someone. Then if you are getting inspired and if you actually want to do work, आप पहले अपना एरिया लाइक एम्पावर योर कम्युनिटी, एम्पावर योर सराउंडिंग्स, एम्पावर योर कॉलोनी इटसेल्फ. आपने जब पहले स्लॉट में क्वेश्चन पूछा तो आपने यही पूछा था कि
कैसे हम और लोगों को इस तक जोड़ सकते हैं, अगर जो हमसे जुड़ना चाहे वो कैसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको खुद को होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। अगर हम सच में कुछ करना चाह रहे होंगे तो हम किसी चीज को नहीं ढूंढेंगे, हम शुरू कर देंगे जो भी हमें करना है। We won't go searching for pages on Instagram. We won't go googling all these things कि हमें कुछ चाहिए. No. The day when I started my all these things, मैंने to be honest I never saw Fridays for Future or anything. मुझे ऐसा लगा कि these things are somewhere जो कि नहीं कहीं पे बात की जाती है and I should talk about it. And to be honest, जब वो बात करना मैंने अपने सोशल मीडिया से शुरू की तो I got a lots of followers decrement. They didn't like me doing all those stuff. And as Kevin says that अभी we have that Pride Month in the fashion sense ना, कि वो एक ट्रेंड चल गया है, सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रहे हैं, सारे लोग उसमें पार्ट ले रहे हैं. To be honest, if I tell you about Lucknow, like I have 2 social media accounts, and to be honest, even in my organization, if you compare the ratio of girls and boys working towards the society, it's about 20 and 80. And especially in my cleanup drives and everything, we rarely got just 4 to 5 girls in our team. And abhi bhi, when as you said that reels जोश पे जा रहे हैं, हम टिकटॉक्स बना रहे हैं, दे आर द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल, बट आप उनको ऑन ग्राउंड नहीं बुला सकते. अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरी रील पे 100 शेयर्स आ रहे हैं, बट वो 100 में से एक भी अगर मुझे दिख जाए ना ऑन ग्राउंड, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी. एंड यहाँ पे तो वो भी चीज नहीं होती है. Got it. Okay, I think Sarah का कुछ. Okay, Sarah, can you hear Okay. us? Yes. So yes, I'll just wind it up fastly. Abhi Yeah, when the Pride Month was going on, I just put up a reel जो कि Pride Month से related नहीं थी. And what I saw, I got about 40 shares, and all those 40 shares were of boys. I was not doing that gender discrimination, but I feel disheartened कि भाई लड़कियां बोलती है ना, why should boys have all the fun, why should only boys are getting these opportunities, why aren't we, because they are not taking it forward. And to be honest, जब मैंने इस बारे में बात की कि मतलब आप लड़कों के बारे में बात कर रहे हो, प्राइड कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, मैं अपनी ही कम्युनिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि ये खुद ही नहीं आती है मेरे को सपोर्ट करने. सो बेसिकली टू बिल्ड ऑल दीज कम्युनिटीज, टू बिल्ड ऑल दीज मूवमेंट्स, we should try to go on ground as much as we can. Just like my visits to the park, my visits, our visit जो भी हमारी टीम पार्क्स में जाती है या कहीं भी जा रही है क्लीन अप करने, रोड पे जाती है, जो हमें वो 5 लोग वहां मिलते हैं इंस्पायर होके, और वो जब हमारे सोशल मीडिया से जुड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें काम करना है, तो टू बी ऑनेस्ट भले वो हमारी ड्राइव्स पे आए ना आए, वो इंडिविजुअली इतना कुछ करने लगते हैं ना कि I think Sarah का connection थोड़ा सा lose हो रहा है. So, okay. Sarah, I think there's some problem at the signal. So if you can quickly wrap up your point. Yes, and also, sure. Since we are really running out of time, so I would also request you all to, sum up and give your message. But why don't you complete your point and then we'll do that. Yes. So yes, talking about the same, to build and to scale up the moments and the communities we have to step on ground in the best way possible. We have to make people aware through various mediums, not just the social media thing. We cannot ignore the social media, but we have to step on ground as well. And सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्ले कार्ड लेने से लोग अवेयर नहीं होते, हर एक चीज करने से लोग अवेयर करते हैं अगर आपके अंदर वो विल है. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी को भी किसी भी कम्युनिटी सर्विस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, आप कुछ मत देखो, पहले आप खुद की एक शुरुआत करो. जस्ट सबको खाना बनाना है, आप yes, just be the change you want to see, because I think कि आप इधर उधर जाओगे. What I am seeing nowadays, people are getting in competition कि वो कर रहा है, वो भी करना है, तो we should not drag up to this all these things, and we just have to be the change whatever we want to see. And I think that's all. I think change starts from ourselves. I think when we see the change, we also see things from that solution lens, right, versus from a problem lens. So we will literally run out of time. But Kunal, अगर आप मुझे अपना एक क्लोजिंग मैसेज दे, क्योंकि हम लोग अपना 75th इंडिपेंडेंस डे भी मना रहे हैं, आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव. तो युवाओं के लिए और हमारे देश के लीडर्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि आज से 25 साल बाद जब हम लोग इंडिया एट 100th
year of its independence celebrate करेंगे. So how do you want to see India? क्या मैसेज है आपका युवाओं के लिए और हमारे देश के लीडर्स के लिए? तो युवाओं और मेरे देश के लिए यही मैसेज है कि हम इंडिविजुअल को आज ही स्टेप लेना होगा. एज एन इंडिविजुअल हमें किसी चीज़ का वेट नहीं करना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आया तो मैंने काम करना शुरू किया. कल कोई स्कूल में ऑर्गेनाइजेशन जाएगा तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के टीचर्स काम करना शुरू करेंगे. नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास ये चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज या फिर कोई भी चेंज. अगर वो नेगेटिव है तो हमें वो आज ही स्टेप लेना पड़ेगा. अगर हम लोग आज ये स्टेप लेंगे तो हम लोग आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 25 साल बाद उस चीज़ का चेंज एक्चुअल में देख पाएंगे. क्योंकि मुझे भी टाइम लगा, मैंने भी 2017 से शुरू किया तो मुझे 2022 में ये चेंज अपने एरिया में और अपने आसपास के एरिया में दिखाई दिया. तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि आप लोग आज ही स्टेप लें, आपसे जितना हो पाए एज एन इंडिविजुअल. और आपके फैमिली को भी आप ये बोलिए, अपने फ्रेंड्स को ये बोलिए कि अगर वो सुनना नहीं चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग अपना कुछ कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम इसके लिए कुछ अच्छा करें. थैंक यू सो मच कुणाल. सारा, आपका क्या मैसेज है हमारे लीडर्स के लिए और यूथ के लिए? Okay, so a quick message. It's like I think we as the Indians have the largest youth population in the world, about 66%. And if not us, then who? If not now, then when? And I think जब भी अब हमारा 100 इंडिपेंडेंस डे होगा, इस चीज को हमें रिपीट ना करनी पड़े कि अभी अब करना है, बिकॉज दिस इज द टाइम टू एक्ट नाउ. वी शुड नॉट डिले ऑल दीज थिंग्स कि कल पे छोड़ते हैं. लेट्स डू इट नाउ बिकॉज it's us who can change this thing and who can bring the change. And I think that is it. Wish you all a very happy Independence Day again. Thank you so much, Sarah. Kevin, last words from you. Lots of pressure, but I'll keep my message short. To government stakeholders, to all development sector partners, private sector organizations working towards social empowerment, and most importantly, to young people. The young people are here. The demographic dividend is here. We have a very, very large youth population. The solution now is to stop thinking just about ourselves and our agendas as a group, to be more understanding between each other, to really understand that we have a common goal that is in our best interest, and to start working towards that. And if we do that, then nobody can stop India. I think India is already a superpower. We have emerged. 25 years is a long time. We have a lot of 25-year-olds and below that to make this happen. Let's just understand each other better and work towards that goal. And wish everybody a very, very happy Independence Day. Great. Thank you so much, Kevin, and thanks to all of you, all the panelists. I think it was such a delight to have this conversation. I wish we had more time, but of course we can take this offline. It's such a pleasure to also connect with both of you, Sarah and Kunal, and we definitely look forward to have you again be part of more conversations, more inspiring conversations. And no doubt, I think as one of us just said, that when we speak to young people, it fills with so much of optimism and hope. And I think this discussion is a one small step towards in that direction of creating much more empowering conversations. And no doubt, India has a great future with young people, young change makers, young campaigners like all of us. Next 25 years, next 2500 years also would be a much, much better future. But yes, we need to act now. Yes, we need to take charge and really truly believe in the power of young people. So thanks again to all of you for joining us today, and thanks to our partners, Daily Hunt and Save the Children, for making this event happen. And wishing you all a very happy International Youth Day, and of course, a very, very happy Independence Day in advance as well. Thanks a lot. We'll see you again very soon. Bye-bye. Thank you. Thanks.